Welcome to the very first episode of Brew to Billions. MVP via MVP. Can you be the most valuable player by just launching a minimum viable product? Introducing Group A, Yashika and Sujan. And Team B, Nikhil and Nishant. A proper market research is very important before entering into the market. And I would like to back my point by giving an example of McDonald's. जैसे कि McDonald's entered into the Indian markets without any prior research. They started selling meat burgers in the Indian market, जैसे कि वो outside India sell करते हैं. And they thought कि वो अच्छा revenue generate कर लेंगे. But वो अच्छा revenue generate नहीं कर पाए. Then they researched and analyzed about the Indian markets and they introduced आलू टिक्की burgers. And when they introduced आलू टिक्की burgers, तो उनका revenue बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया उससे और उनका जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंडियन मार्केट्स के अंदर वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मार्केट रिसर्च दे वर एबल टू कट द कॉस्ट एज वेल और वो कॉस्ट एफिशिएंट भी काफी ज्यादा बन गए. तेरा पॉइंट सही है बट आई थिंक ये एक एग्जांपल है इस सिचुएशन के लिए. I'd say that प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द सेम थिंग. एक्सपीरियंस होना चाहिए उस प्रोडक्ट लाइन में. तो जब तुम प्रोडक्ट पहले लॉन्च करोगे देन यू विल एक्चुअली सी व्हाट द कंज्यूमर्स डिमांड. देन यू कैन मेक चेंजेस इनटू इट एंड इवेंचुअली तुम्हारा प्रोडक्ट मोर एफिशिएंट हो जाएगा. इसी को बैक करते हुए आई थिंक आई हैव एन एग्जांपल व्हिच इज इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम वाज बेसिकली लॉन्च्ड इन 2010 में ही हाइप बढ़ने लगा इंटरनेट का. इवेंचुअली उनका आइडिया था कि बस वो एक सोशल मीडिया ऐप रखे जिसपे थॉट्स एक्सचेंज हो. बट उन्होंने अपना आइडिया पूरा चेंज करके एक ऐसा आइडिया बनाया जिसमें अपनी पिक्चर्स डाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो. बट ये आइडिया जब स्टार्ट हुआ था तब इट वॉज मियरली $1,000 के आस मतलब $100,000 के आसपास. बट उन्होंने जब अपना आइडिया चेंज करा जो कंज्यूमर्स की डिमांड थी उस हिसाब से 2 साल में बाय 2012 वो $1 बिलियन कंपनी बन गई जो फेसबुक ने इवेंचुअली खरीद ली. See, research is more important than theoretical knowledge, as you just mentioned. If you take an example of Bummer, it was a product in Shark Tank India, which sold stylish undergarments, and they had a USP of selling high quality material product, which were made from micro mollusc fabric. Then this fabric was great quality, the product was really great, but they didn't research well about the market and they failed to cater to the market. And बिना रिसर्च के यू जस्ट कांट सर्वाइव इन टू द मार्केट. अगर तुम्हारी रिसर्च ही नहीं है, इफ यू डोंट इवन नो योर कंज्यूमर्स अबाउट योर मार्केट, अबाउट योर प्रोडक्ट, देन हाउ वुड यू सर्वाइव इन इट? सी अकॉर्डिंग टू मी मार्केट रिसर्च तब जरूरी होता है जब तुम्हारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं होता है. बट व्हेन यू हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज देन it already gives you upper hand. Let me back it by giving an example. Shaadi.com was launched in 1996 और इंटरनेट इंडिया में 1995 में आया था. At that time, hardly any Indians knew about internet, but it still managed to become a $1 billion company. And on the contrary, आप भारत मैट्रिमोनी को देख लो, वो 2000 में आया, R&D करके आया पूरा, फिर भी आप कंपेयर कर लो कौन कहाँ खड़ा है. I don't completely agree with your point, Nishant, and especially the first mover advantage stuff. See, I would like to give an example to that, like BlackBerry. BlackBerry launched its phone in 2002. And iPhone, on the other hand, first researched about the market, the whole market, not just the Indian markets. And उन्होंने एक टाइम किया अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का. दे वेटेड व्हेन टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी उतने लेवल तक, तब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. उन्होंने एक इकोसिस्टम रेडी किया लाइक विद द हेल्प ऑफ iTunes एंड ऑल दैट. उन्होंने प्रॉपर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया अपने कस्टमर्स को विद दैट एंड दे लॉन्च देयर आईफोन्स इन द ईयर 2007, 5 years के बाद. एंड इवन BlackBerry was having the first mover advantage as you said, but still you can see nowadays that iPhone is much more available in the market. लोग वही कैरी करते हैं, वही खरीदते हैं, बट BlackBerry अब अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर. सो या आई वुड लाइक टू से विद दैट. As you all know, in today's world, some social media influencers create a fake sense of authenticity, making their success seem constant and using tricky tactics to sell products that claims to solve problems. This gives rise to clickbait content, promising knowledge in a short period of time, often presenting oversimplified or misleading information. For example, you must have seen people on the internet telling you that they can teach you data science or data analysis in just 2 hours. But that is just the tip of the iceberg. It fools you into believing that you know a lot. Similarly, in the case of startup influencers, this gives rise to 2 types of viewers.
In the online world, there are two types of views. The first type is what we call the solution looking for a problem approach. These type of people don't research their idea well to understand even a market for their idea exists. For example, simple solutions like zipline. It may seem great to a few number of people, but doesn't really meet the needs of the society. On the other hand, the second type of people are people with great ideas but minimum market research. These type of people show their cards way too early with no idea about the market. These type of ventures often fail basing their potential. This debate isn't meant to discourage entrepreneurs but to encourage thoughtful actions. Entrepreneurs must research thoroughly, ensuring that their ideas solve real problems and match what the people want. Let's embark on an entrepreneurial journey focusing on being real, researching well, and solving everyday problems. Thank you so much for tuning to the very first episode of Brew to Billions. Like and subscribe to ECell Aryabhatta for more such content.